Hello everyone, welcome to the channel. Rohit this side, and this was my day 4 of 100 days coding challenge, and I'm learning React. So today I learned about hooks in React and made a small program which was a counter application, a small application in which I made two buttons. One is add value, second is remove value. When we click on add value, it goes like 1 2 3 4 5 6 7 up to infinity, and when we remove value, then the value removes by 1 2 3 4. Like if it's 5, then 4 3 2 1, then -1 -2 -3, like that. Okay. And also Hitesh sir gave a exercise which was validation. I mean, I have to validate the application by, like, the application goes 1 2 3 to 20 and stop. 20 के आगे नहीं बढ़नी चाहिए, and 20 से नीचे 19 18 17 16 till 0, 0 से नीचे नेगेटिव में नहीं जानी चाहिए, like that. तो यस, उसमें थोड़ा if else वगैरह स्टेटमेंट्स यूज़ करने थे. So I'll show you the program which I made, the counter application. Okay, so this is the program which I made, the counter app. And in this program I used hooks. So hooks are basically used to use class components in function components. Okay, so here we use the function app, function add value. So to use class components in this function components, we use hooks. Okay, so here I used use state hook and gave parameter counter and set counter. Counter will be called at the end, and set counter will set the counter, okay, which is initialized by 0, and when we add the value, then it will go like 1 2 3 4. Okay, so the change will be in set counter, and counter will display on the web page, display that 0 1 2 3. Similarly, message is to print message on the web page, and set message is to set the message. And we use the use state hook and empty string. Empty string means no message. If we write anything here, the message will be printed on the web page. Okay, so at start we don't want any message to be printed. So here I made add value function, and in that add value I used if statement. If statement is to validate the code, validate the counter. So the parameters are counter is greater than and equal to 0 and counter is less than 20, then print counter equal to counter plus 1. ओके, अगर काउंटर 0 से इक्वल या बड़ा हो या फिर 20 से छोटा हो तो काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1. अभी यहाँ पे काउंटर लेस देन एंड इक्वल टू 20 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इधर पे काउंटर प्लस 1 लिखा है, तो जब यहाँ पे 20 होगा प्लस 1 21 हो जाएगा वो. दैट्स वाई लेस देन 20, तो ये बराबर 20 तक ही रहेगा. एल्स सेट मैसेज काउंटर कैन नॉट एक्सीड 20. ओके, अगर उसके बाद भी किसी ने क्लिक किया ऐड वैल्यू के ऊपर तो ये मैसेज जाएगा उससे, ये मैसेज बाद में कॉल होगा. पहले यहाँ पे सिर्फ सेट हुआ है मैसेज, है काउंटर कैन नॉट एक्सीड 20. आफ्टर दैट सेट काउंटर इज टू set the counter, as I told you before. After that I made this remove value function. This remove value function is to remove the value by 1. Okay, in this function also I use the conditional statement, which is if statement, and in that I use the condition counter greater than 0. If counter is greater than 0, then set counter minus 1. अगर काउंटर 0 से बड़ा है तो फिर काउंटर -1 चला दो. और एल्स सेट मैसेज काउंटर कैन नॉट गो बिलो 0. ओके, अगर उससे बाद भी, मतलब काउंटर 0 पहुंचने के बाद भी कोई अगर वहाँ पे बटन दबाएगा तो ये मैसेज उसको वहाँ पे प्रिंट हुआ मिलेगा. ओके, आफ्टर दैट दिस इज़ द रिटर्न व्हाट आई वांट टू रिटर्न टू द यूज़र. सो फर्स्ट इज चाय और रिएक्ट, विच इज़ लाइक यस आई एम लर्निंग फ्रॉम चाय और कोड. सो चाय और रिएक्ट. आफ्टर दैट काउंटर वैल्यू and in curly brackets counter. Okay, so this is like counter value, and when counter will change, this value will change. Okay, after that message. So this message is to call the set message. Okay, and this counter is to call the set counter.
After that, these are the buttons. On buttons I use event listener, which is on click, and add value is the function which I used. So जब भी ऐड वैल्यू पे अपन क्लिक करेंगे उसके बाद बढ़ेगी वैल्यू, एंड सेम टू रिमूव वैल्यू पे जब अपन क्लिक करेंगे तो वैल्यू रिमूव होगी. उसका कोड अपन ने उस फंक्शंस में लिखा हुआ है, तो उस मतलब उस हिसाब से वो लोग काम करेंगे, ठीक है. एंड यहाँ पे बस अपन ने ऑन क्लिक लगा दिया है, मतलब क्लिक होने पे ही वैसा होगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा. उसके बाद ये जो एंड की लाइन है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट टैब, ये तो पता ही है भाई, नेसेसरी है, ठीक है. सो दिस वॉज द कोड, the final code, and I'll show you the output. Okay, okay, so this is the program. Okay, a second. Yes, when we click on add value, the value will be added by 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 till 20. Okay, 18, 19, 20. And after hitting 20, if we click on add value again, then it will show the message counter cannot exceed 20. Same is for remove value, 19, 18, 17, 16, like that. When we reach 0, and when we click on the remove value again after hitting 0, it will show the message which is counter cannot go below 0. Okay, so this was it. This was my day 4. I'll see you on day 5. Thank you so much for watching. Bye bye.